Hello friends, good morning, welcome to Exambi. Can you please confirm if I'm clearly audible and you all can see the screen clearly? Please confirm in the chat box. ठीक है. Okay. So today we are here with our third part 3 of our RBI Grade B revision series for the general awareness. ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको नेक्स्ट मिलेंगे जो कि सुशील सर लेंगे जनरल अवेयरनेस की जो फर्दर 5 वीडियोस आर देयर दैट विल बी टेकन बाय सुशील सर. तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल ताकि ये सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिल जाए एंड प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल. And if you have any queries with respect to your preparation, feel free to shoot us a mail at hello@ixambi.com. ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन स्टार्ट करते हैं. ये है जनरल अवेयरनेस का रिवीजन सीरीज पार्ट 3. द लिंक फॉर द लास्ट 2 पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस सीरीज का ये सेशन का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So let us see our first question. That is first question of the session. That is the President of India Ramnath Kovind visited Netherlands as the two nations celebrated 75 years of diplomatic relations. So President Kovind named what tulips in Netherlands as Maitri. What kind of tulips was named as Maitri by the President of India? And the visit was to Netherlands. प्लीज टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. अगर कोई साउंड एंड ऑल का इश्यूज है तब भी आप एक बार चैट बॉक्स पे लिख देना. प्लीज ट्राई टू आंसर दिस वन इन द चैट बॉक्स. द आंसर फॉर दिस इज वेलो. ठीक है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एम्स्टरडैम नीदरलैंड पहुंचे ऑन 3-day ऑफिशियल विजिट. तो क्यों पहुंचे? 75 years of diplomatic relation with नीदरलैंड. सो जो वेलर टिलिप्स फ्लावर है, सो इंडिया नेम्ड इट एज मैत्री. यस, yes, C is the answer. Nitya and Aves, you all are correct. The second question, Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy digitally inaugurated 13 new districts in the state. Now, what is the total number of districts in the particular state? So, Andhra Pradesh mein, what is the total number of districts? Please type your answers. Yes, the answer here is 26. So after inaugurating 13 new districts, तो total district का जो count है that reached to 26 in Andhra Pradesh. Each district will now have 6 to 8 assembly segments except one tribal district. तो आपको याद रखना है there are 26 total districts and 13 new districts in Andhra Pradesh. In which state Gangor festival and Sarhul festival are celebrated respectively? This question is very important क्योंकि last हमने देखा है आरबीआई में बहुत बार they have asked questions on festival. तो आपको बताना है गंगोर फेस्टिवल एंड सरहुल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट्स? गुड मॉर्निंग सत्यम. मिन्नत, यस यू आर करेक्ट. 26 डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश. तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान एंड झारखंड. ठीक है, गंगोर फेस्टिवल इन राजस्थान एंड सरुल फेस्टिवल इन झारखंड. सो सी इज द आंसर हियर. ठीक है, राजस्थान द फेस्टिवल ऑफ गंगोर वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट विद ट्रेडिशनल रेवरेंस एंड केटी फ्रॉम 18th March to 4th April ये हुआ. एंड सरुल फेस्टिवल इन झारखंड रीजन. Perfect. So the next question, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath launched School Chalo Abhiyan with an aim to ensure 100% enrollment in what kind of school across the states? 100% enrollment
is the aim, and this happened in उत्तर प्रदेश. ठीक है, आपको बताना है in which kind of school इस यूपी का जो एम है 100% एनरोलमेंट करना है इन विच काइंड ऑफ क्लासेस. यस, द आंसर हियर इज बी, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स. ठीक है, स्कूल चलो अभियान, देयर आर 3 इंफॉर्मेशन यूनिट टू रिमेंबर हियर. स्कूल चलो अभियान इज बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, 100% enrollment is the aim in primary and upper primary schools. ठीक है, for 54 it is B. The next question, which state government has launched a scheme to provide personal loans for prisoners with the aim to improve living standard of their families? मतलब जो inmates हैं उनकी families के standard of living बढ़ाने के लिए personal loan will be provided. Which state started that? जेल इनमेट्स हैं उनकी फैमिली के पर्सनल नीड के लिए which state government has started giving personal loans? Yes, the answer here is Maharashtra. ठीक है, C, Maharashtra. So Maharashtra State Cooperative Bank will provide these loans up to 50,000. ठीक है, इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% पर एनम. तो ये यरवदा सेंट्रल जेल से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है पायलट बेसिस पे. द आंसर हियर इज महाराष्ट्र. परफेक्ट. Yes, Nilesh, you are correct. Minnat, you are correct. The next question, which of the following approved financing of USD 250 million for Bangladesh to help it strengthen policies to sustain growth following the COVID-19 pandemic? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 250 मिलियन यूएस डॉलर प्लेज किया है फॉर बांग्लादेश? The purpose was to strengthen policies to sustain growth in the country. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 250 मिलियन बांग्लादेश को दिया है? Yes, here it is your World Bank. ठीक है, so World Bank approved financing of 250 million US dollar to Bangladesh, strengthen policies to sustain growth. ठीक है. The next question, the IMF released paper titled Pandemic Poverty Inequality Evidence from India. So as per that report, India managed to keep extreme poverty below what percentage level in 2020 despite the COVID-19 outbreak by resorting to food transfer through प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. तो IMF ने ये पेपर रिलीज किया, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया. सो ये पेपर बात करता है इंडिया के बारे में, एंड इट सेज India has been able to keep the poverty level below a certain percentage in 2020 despite we have COVID-19 outbreak. Why and how? Because of प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. आपको पता होगा, under this प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना food transfers happened. तो इस रिपोर्ट कहता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना played an instrumental role in keeping the extreme poverty percentage in India below, it is below 1%. ठीक है, below 1%. A is the answer. It is below 1%. So as many as 89.1, almost 90% rural eligible households and 77% of urban households इन्हें पीडीएस के थ्रू पीएम गरीब कल्याण योजना का बेनिफिट्स मिला है. ठीक है. So according to Asian Development Bank's Asian Development Outlook 2022, the growth projected in India's what percentage? Current fiscal years का growth percentage जो projection होता है by ADB क्या है? Yes, Awais, you're correct. That is 1%. अभी आपको ये क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स पे लिखना है. यस, द आंसर हियर इज 7.5%. ठीक है, 7.5%. सो द सेम एशियन डेवलपमेंट आउटलुक टॉक्ड अबाउट साउथ एशिया, जो कि साउथ एशिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन इज एट 7% in 2022 and 7.4% in 2023. For India, the current financial year is 7.5% and 8% the next year. You need to remember all these figures as well, South Asia ka as well as India ka. Which of the following Ideothon was launched by SEBI to harness technology in securities market to give
bespoke solutions at a very low cost individuals across the country. तो सेबी का this was an ideathon by सेबी. What is the name of that ideathon? पर्पस क्या था? टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में टू प्रोवाइड लो कॉस्ट सॉल्यूशंस टू द स्टेक होल्डर्स. यस, दिस मंथन. ठीक है, ये था मंथन. तो बेसिक आइडिया क्या था इसका? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इन द सिक्योरिटीज मार्केट. ठीक है, मंथन. परफेक्ट. The President of India, Ramnath Kovind, visited Netherlands. Okay, we have seen already. We have already seen this question, right? The next one: which rural bank launched a new deposit scheme, Vikas Siri Sampath 1111? Which rural bank launched a new deposit scheme, Vikas Siri Sampath 1111? We're talking about the RRBs here. Yes. The answer here is Karnataka Vikas Gramin Bank, that is D. ठीक है, Karnataka Vikas Gramin Bank launched a new deposit scheme, Vikas Siri Sampath. Scheme is of 1111 days with interest rate of 5.70. General public 6.20 for senior citizens. ठीक है, this is a deposit scheme. नाम क्यों है ऐसा? Because the tenure of this deposit scheme is 1111. ठीक है, this is by Karnataka Vikas Gramin Bank. Perfect. Which of the following bank adjudged as best performing bank in SHG's linkage by Deen Dayal अंत्योदय योजना NRLM? कौन सी बैंक को बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक का अवार्ड मिला फॉर SHG लिंकेज प्रोग्राम अंडर NRLM? कौन सी बैंक को बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक का अवार्ड मिला? द आंसर हियर इज HDFC बैंक. ठीक है, सी HDFC बैंक. So HDFC Bank Limited has been adjudged as best performing bank in SHG linkage by NRLM. It is the only private bank to be honored with the award for the contribution in SHGs by NRLM. NRLM आपको पता होगा that comes under the Ministry of Rural Development and launched in 2011. Main objective क्या है? Poverty alleviation. It was also known as Ajivika Mission. फिर ये this was renamed to NRLM. The next question: which private sector bank in India has acquired Citibanks India consumer business for an amount of 1.6 billion US dollar or almost 12,300 crores? कौन सी प्राइवेट सेक्टर बैंक ने सिटी बैंक का इंडियन बिजनेस को एक्वायर किया? Here is the next question for you. Which private sector bank in India has acquired Citibank's Indian consumer business for an amount of 1.6 billion US dollar? The answer here is C, Axis Bank. ठीक है, so Axis Bank has acquired Citibank's Indian consumer business for 1.6 billion US dollar. तो इंडिया का जो कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस है सिटी का, इंक्लूडिंग रिटेल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर लोन्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब एक्वायर हुआ है बाय एक्सिस बैंक. The next question: which bank signed an MOU with the Software Technology Park of India, that is STPI, for leveraging innovation through the financial technologies engaged under FinBlue initiative? Another question on bank: कौन से बैंक ने MOU साइन किया है with Software Technology Parks of India STPI for leveraging innovation through financial technologies FinBlue initiative के अंडर? Yes, Indian Overseas Bank is the answer. ठीक है, so Indian Overseas Bank and STPI इन्होंने MOU साइन किया है. ठीक है. The next question: which private sector e-commerce company launched a new platform
with a focus on development in rural areas, providing equitable access to growth opportunities for women and other disadvantaged communities. कौन सी प्राइवेट सेक्टर ई कॉमर्स कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है विद प्राइम फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज? यस, इट इज फ्लिपकार्ट. ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ग्रुप का जो फाउंडेशन है दैट इज फ्लिपकार्ट फाउंडेशन. ठीक है, ये फाउंडेशन क्या करेगा अभी? with a focus on development in rural areas, providing equitable access to growth and opportunities for women and other disadvantaged communities. ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्लिपकार्ट ग्रुप का फाउंडेशन का नाम है फ्लिपकार्ट फाउंडेशन. सो ये एक प्लेटफॉर्म के काम करेगा फॉर द रूरल people. According to FICCI's Economic Outlook survey, India's GDP is estimated to grow at how much percentage in the financial year 2022-23, this current financial year. FICCI का इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे आता है. एज पर दैट सर्वे इंडियाज जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट व्हाट परसेंटेज? नो प्रॉब्लम मिन्नत, आप सेशन को देख लेना एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द पीडीएफ जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ ही देर में मिल जाएगा. एंड प्लीज गाइज रिमेंबर जो नेक्स्ट सेशंस होंगे जीए का, दोज विल बी टेकन बाय सुशील सर. ठीक है, तो आंसर हियर इज 7.4%. ठीक है, 7.4% पे इंडिया ग्रो करेगी इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर. कौन कह रहा है? फिकीस इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एनबीएफसी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अचीव्ड द हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शंस of around rupees 23,900, almost 24,000 crores. कौन सी एनबीएफसी ने हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शन किया है? दैट इज अराउंड 24,000 crores. यस, द आंसर हियर इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. तो आपको ये भी याद रखना है, द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज एन एनबीएफसी. ठीक है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर. ये आपको याद रखना है, दिस वर्क्स एज एन एनबीएफसी. ठीक है, तो जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोजेक्ट्स होता है वहां पे दे प्रोवाइड लोन्स. इट एम्स एट प्रोवाइडिंग टर्म लोन्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो आईआरडीए ने अभी वो रिकॉर्ड किया, दैट इज ऑलमोस्ट 24,000 crores का लोन सैंक्शन पे. So Ramdaras Misra has been named as Saraswati Samman 2021 for which book? A question on book and authors. एक या दो क्वेश्चन हर साल आता है इसमें से. Ramdaras Misra has been named for Saraswati Samman 2021 for which book? Yes, मैं तो यहाँ हूँ. ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ हिंदी पोएट्री कलेक्शन बाई रामदास मिश्रा. तो इन्हें मिला सरस्वती सम्मान 2021 एंड प्लीज रिमेंबर द बुक वाज पब्लिश इन 2015. तो ये सरस्वती सम्मान कौन देते हैं? इट इज बाय द के बिरला फाउंडेशन. 1991 से दिया जा रहा है, के बिरला फाउंडेशन दे रहे हैं इसे सरस्वती सम्मान. तो 2021 किसको मिला? रामदास मिश्रा फॉर मैं तो यहाँ हूँ. So in ICC Women's World Cup, who came at the top in most runs table? ICC Women's World Cup में most run, इसमें who secured the top position? Yes, so Alyssa Healy, she secured top position in most runs and she belongs to Australian team. यहाँ पे आप देख सकते हो अदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अदर क्रिकेटर्स जो उस टेबल पे है. 2 belongs to Australia, 1 England and 1 South Africa. So at the top, Alyssa Healy. Perfect.
For 69, it is D. The next question: who is the author of recently released Queen of Fire book? It is asking the author, the name of the author of Queen of Fire book. Yes, it is D. Devika Rangachari. Devika Rangachari is the author of Queen of Fire book. Please remember. तो ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है ऑन द विविड लाइफ ऑफ द इन द 19th सेंचुरी क्वीन. ठीक है, तो क्वीन ऑफ फायर ये बुक का ऑथर है देविका रंगचारी. परफेक्ट. यस, अभिलाषा, अवेश, नीलेश, यू ऑल आर करेक्ट. व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे दिस ईयर? नेशनल मैरीटाइम डे का थीम क्या था? What is the theme for National Maritime Day? Sustainable shipping beyond COVID-19. ठीक है, तो Maritime Day is annually observed on 5th of April. 5th of April every year. So इस साल का थीम था Sustainable shipping beyond COVID-19. That is C. ठीक है, C is the answer here. Sustainable shipping beyond COVID-19. And please remember the date as well. That is 5th of April. So the next question: the 20th edition of bilateral naval exercise between India and which country's navies, Baruna, was conducted in Arabian Sea in from 30th March to 3rd April. So Baruna exercise that happens between two countries' navies. One is India and which country? Yes, the answer here is France. ठीक है, India and French navies exercise that is called Baruna. This happened in Arabian Sea. So आपको यहाँ पे कितने इन्फॉर्मेशन याद रखना है? One is 20th edition of Baruna exercise. Baruna exercise happened between India and France की navies and this happened in Arabian Sea. लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछे थे कि which edition of this particular exercise happened. So आपको इतने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखना है. 20th edition bilateral naval exercise Indian French navies. Perfect. So Utkal Divas is observed every year on which date? It is the state establishment day of Odisha. On which date? Yes, Nikita, Aves, Avilasa, Vikram, you all are correct. So Utkal Divas, the establishment day of Odisha, is observed every year on which date? The answer here is 1st of April. ठीक है, so Odisha was made into a separate state on 1st of April. So that is the reason we observe Utkal Divas on 1st of April. The next question: which bank has signed a partial guarantee facility agreement, that is PGFA, with Asian Development Bank to support supply chain financing? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट किस बैंक ने साइन किया है? द पर्पस इज टू सपोर्ट सप्लाई चेन फाइनेंसिंग इन इंडिया. Yes, Nikita, Avilasa, Aves, you are correct. Please answer this one. Yes, Axis Bank is the answer. ठीक है, Axis Bank and the Asian Development Bank they signed a partial guarantee program जो कि होगा 150 मिलियन यूएस डॉलर पे. क्या उसका पर्पस है? सपोर्टिंग सप्लाई चेन फाइनेंसिंग. जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन सेक्टर्स हैं, वहां पे फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए Axis Bank and the Asian Development Bank signed this agreement. So the last question of this session: IDFC Limited announced the sale of its mutual fund business to a consortium led by which of the following bank? तो IDFC बैंक का जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है ये गया एक कंजोर्शियम के पास. कंजोर्शियम मतलब अ ग्रुप ऑफ फ्यू बैंक्स. तो ये जो कंजोर्शियम है दिस वाज लेड बाय व्हिच बैंक? Guys, please remember ये सेशन का पीडीएफ आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ ही देर में, 10-15 मिनट में। तो उसे भी एक बार आप डाउनलोड करके फॉर योर रिवीजन पर्पस देख लेना। यस, द आंसर हियर इज बंधन बैंक। ठीक है, तो जो कंसोर्शियम था दैट वाज लेड बाय बंधन बैंक। तो आईडीएफसी का जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है दैट वाज सोल्ड टू दैट कंसोर्शियम। So in total we saw 75 questions in the last three videos। जो सीरीज के 3 वीडियोस थे, हमने 3 वीडियोस में 75 क्वेश्चंस देखे। एंड there are more 5 more videos in this series that will come। and guys please remember ये जो 5 सीरीज होगा सुशील सर का होगा। ओवरऑल आपको कंसोलिडेशन रिवीजन में हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो what should be your approach, what should be your attitude while attempting the exam or attempting the questions in the exam, वो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो ये वीडियोस आपको जरूर देखना है। एंड टू गेट द अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। एंड गाइज इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ ही देर में। इफ यू हैव एनी क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, hello@iexambee.com पे आप मेल कर सकते हो, और यू कैन ऑलवेज कॉल अस एट दिस नंबर दैट इज 9205524028। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन, ये 3 वीडियोस अभी तक का ये सीरीज का, आप प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड के साथ शेयर करना, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी और एनी अदर सिमिलर एग्जाम्स। हैव अ ग्रेट डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।